नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संवाद। एक खास मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बात करते हैं दिल से। आई एम स्नेहा सिंह, योर होस्ट फॉर टुडेज एपिसोड, वेयर वी डिस्कस स्किन डीप, साइंस, केयर एंड कॉन्फिडेंस। Dr. Sneha Gupta, she is an accomplished medical professional with an MBBS and MD from IMS BHU and the director of Atomic Clinic Varanasi. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद में। क्यों? माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, भांग, सीढ़ी और सन्यासी के शहर बनारस को आप स्किन केयर और हेयर केयर का बनारस बनाना चाहती हैं। प्लीज़ टेल अस अबाउट दैट मैम। So basically, Varanasi is full of rus and every heritage, culture, prestige, कह सकते हैं हर वो रस है जो वाराणसी में होना चाहिए। हेरिटेज, ओल्ड सिटी, in the tourism, this is very famous. In terms of education, BHU is well known. So why not in the field of aesthetic? ये पीछे कैसे रख सकता है? So we take initiative कि we actually in the first 3 years I started education about the skin, hair and body because it's a major organ of our body. So in the holy city of Varanasi, I created a field so-called aesthetic, and we are the first one, and we are succeeded in this field to create awareness among that what you call Varanasi people, जो कि दिल से भी अच्छे होते हैं, आजकल स्किन से भी अच्छे हैं। थैंक यू सो मच मैम, दैट वॉज रियली इंसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग। मूविंग अहेड, वाराणसी का एक बहुत अहम हिस्सा टूरिज़्म भी है। सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज़ द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ मेडिकल टूरिज़्म इन वाराणसी? सो मैं जो वाराणसी को समझती हूँ, वाराणसी इज़ अ प्लेस जहाँ हर कुछ एक साथ मिलता है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल, एजुकेशन, हेल्थ प्रोफेशनल। इट्स अ बेस्ट हेल्थ प्रोफेशनल सिटी इन टोटल पूर्वांचल एंड होल पूर्वांचल। सो हम रांची, एमपी, बिहार और ये सारे एरिया जो पूर्वांचल को कवर करते हैं, ऑल द पीपल्स आर कमिंग टू द वाराणसी इन एजुकेशन, स्पिरिचुअल विजिट। एंड व्हेन आई स्टार्टेड दैट एस्थेटिक, तो लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ा बिकॉज इसके लिए हमें दुबई जानी पड़ती थी, दिल्ली, मुंबई और मेट्रो सिटीज़ में जाना करता था, और ये चीज़ें ना कॉमन टू ऑल नहीं थी। एस्थेटिक इज़ लाइक फिक्स्ड टू द सम grade of peoples. Maybe they are rich, maybe they are approachable, but with the help of Atomic, I just realized aesthetic is for all. So they are attracting more tourism because of aesthetic. More patients are booking Atomic for aesthetic, and they have a insight of Varanasi. That's a very interesting perspective for the future of Varanasi. Moving ahead, let's talk about the one concern we all agree upon, having and hair fall. As an expert, आप हमें इसके मेजर causes और solutions के बारे में क्या बताना चाहेंगी? So hair fall बहुत ही कॉमन है both in male और female. Androgenic alopecia is common to both genders. अगर मैं फीमेल की बात करूँ, so in spite of androgenic alopecia, hemoglobin की कमी यानी anemia is most common in females. Secondly, thyroidal problems, endocrine like PCOD, stress-induced telogen inflammation, और या फिर कोई major illness, for example childbirth, something stress related to exams, ये भी hair fall को commonly aggravate कर रहा है। Males में androgenic alopecia still the most common causes. Second, nutritional deficiency, vitamin B, B12, D, and infection, that is seborrheic hepatitis और fungal infection more common है मेल में। अगर हम रेमेडी की बात करें तो अर्ली अवेयरनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हमारे अगर में कोई को फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्सेस की डिफिशेंसीज है, जस्ट करेक्ट इट। अगर इन्फेक्शन है, यू कैन करेक्ट द इन्फेक्शन एंड डिस्कस टू द डॉक्टर whether it is genetic. अगर genetic है तो lots of treatments available for androgenic alopecia like Regeneron Activa, exosomes, PRP and hair transplants. Thank you so much, ma'am, for answering this. Now, moving forward, glutathione injections और tablets का ट्रेंड काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। प्लीज़ टेल अस कि एग्जैक्टली ये है क्या करता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ इट सेफ? ग्लूटाथायोन बेसिकली हमारा बॉडी भी प्रोड्यूस करता है बाय द लीवर। इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन आवर बॉडी, एंड ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर की सेफ्टी के लिए जाना जाता है।
इन इंसियंट टाइम या फिर कर सकते हो अभी भी गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ग्लूटाथाइन को बहुत यूज़ करता है बिकॉज ये लीवर डैमेज को प्रोटेक्ट करता है. सो IV ग्लूटाथाइन मोस्ट कॉमनली यूज एज अ ट्रीटमेंट इन लीवर डैमेज केसेस. पर देखा गया कि ग्लूटाथाइन जो है इन स्पाइट ऑफ करेक्टिंग द लीवर डैमेज they are reducing the melanin also. So the patient have a whitening effect. Now that's the way they came to the aesthetics. So because these are the antioxidants, they protect the liver, they protect your immune system. Because they decrease the melanin, decreases the melanogenesis, you have a lightening effect. So overall the peoples are liking because they want to look good, they want to look young. They want to prevent that digital aging because of the social media and digital screen. So they are using as a antioxidants. Yes, it is safe because usually in the doses of like 200 mg it's very safe. Beyond that you have to consult your doctor because कहते हैं ना excess of everything is bad. So it's safe but need a doctor consultation if you're crossing 1000 mg. That really clears the confusion around it. Thank you, ma'am. Moving ahead, let's talk about the Gen Zs now. The lifestyle today is different, and so are the concerns we face. As an expert, how do you suggest we take care for our skin? Gen Z is actually the digital peoples. Actually, they are born with digital media. They are living the life with digital media, and in the future prospect, they are moving to more aggressive use of digital media and social life. So they are suffering from stress. They're having nutritional deficiency because of UVA, UVB, invisible light, and the blue light because of screen. They're having premature aging. The things जो हमें होनी चाहिए 40s में, they are Gen Zs are suffering from 20s, early 20s. Yes. So but I love the generation of Gen Z because that generation actually evidence based things को like करते हैं. They are not the people कि आपने कुछ चीज़ों को समझाया और they are not science backed. They will disqualify the things. So Gen Zs को मैं कहूँगी कि educate yourself, educate this era कि इस समय क्या problems चल रही है and आप ऐसे generation हो जो हमसे ज़्यादा smart हो. So know your problems, why it is happening, why your hair fall is like aggravated, why you're having a skin uneven tone, your wrinkles are appearing early 20s. Just know the deficiency, ask your doctor, correct it, apply sunscreen in even in your inside your room because you're suffering from visible and infrared. And you peoples are rocking the world. I want to always work with the Gen Zs because they are very fast paced peoples and they are always communicable. They are not overburdened, they are not over smart. They are actually science people. They know what is the science behind the things and is it relevant for me or not. तो मैं उनको कहना चाहूँगी Gen Zs को कि start your skin care because you are the people that need skin care and hair care most because of stress and because of digital screen. That's very practical and advice for all of us. Moving forward, talking about Gen Z, let's also address social media wala skincare. Instagram is flooded with different skincare, being it Korean skincare or 10 steps class skincare and what not. As a professional, आपकी क्या सलाह होगी कि स्किन केयर रूटीन कैसा होना चाहिए? बहुत ही सिंपल. डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड विद इंस्टाग्राम बिकॉज OTC जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन ऑल प्रोडक्ट्स वेदर इट इज़ क्लिनजर, मॉइस्चराइजर, सीरम एंड सनस्क्रीन. दे हैव ऑल दैट niacinamide, vitamin C, vitamin E and retinol, everything in their every products. You're using exposing harsh chemicals to your skin. Be gentle. You need a skin type based cleanser. If you are oily skin, pick salicylic 1% or glycolic 1% with niacinamide as a cleanser. Use milder cleanser when you're using something prescription based tretinoin. A serum if you have a acne like salicylic, niacinamide, hazel treaty based serums. Ask your doctor. Curate your skincare.
a moisturizer that is according to your skin, whether it is dry or oily, and a sunscreen. That's it. Consistency matters a lot than 10-step skincare. Second, 10-step is not made for us. Here we are living in a hot, humid conditions. We are exposing to dust. You're living in an area Yes, where there's lots of humidity. We are actually clogging your pores, and you're developing to open pores and aggravation of acne. So don't fall in a trap of Korean, because the skin looks Korean, but they are having a lots of surgery and laser treatments to get this skin. Plus they have a genetic predisposition also. Know your skin type. We are the Indian peoples. We need a basic 3-step skincare: cleanser, moisturizer, and a sunscreen. Trust me, that Gen Z guys, if you do consistently a basic skincare, you never end with a treatment. thank you, ma'am, for guiding us on that. Now, my next question to you is diet, sleep और हाइड्रेशन का स्किन और हेयर हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट होता है? आर देयर एनी सुपर फूड्स फॉर ग्लोइंग स्किन एंड हेल्दी हेयर्स? Yes, obviously, nutritional deficiency is always catered by the diet. Diet has an important role in our body. Because of this generation, we are suffering from, we are like taking a fast food. So, हमारी जो diet है, there something deficient in nutritional, and there's lots of imbalance because of stress also. So, hydration और diet में अगर बात करूँगी मैं, तो hydration is very important for us, because I always believe our body is made of 70% of water, and our earth is also made of 80%, 70 to 80% of water. A newborn baby have a 90% of water. We have 70% of water. So a water, plant needs water, our skin, that intracellular level needs water, our keratinocytes needs water. Water, if you give a water intake properly to your body, the skin becomes hydrated. Not, I don't think every problem is solved with water, but at least 30 to 40% problems is solved with Water. simple water. Again, you need a locking of hydration, a moisturizer. So it's basic things apply. It's not that I'm drinking water and everything is solved. Apply moisturizer and sunscreen, protect your the barrier and protection from sunscreen. Next, the diet. I always advise my patients, see, diet is very important. What you eat is reflection on your skin and body. So yes, there are lots of superfood. अगर आप एंटी एजिंग की बात करें तो विटामिन ए वाले प्रोडक्ट्स आप जो इंग्रेडिएंट्स से खा सकते हैं, लाइक स्वीट पोटैटो, carrot is a great source of vitamin A. Then avocado is lots of vitamin C, K, E, magnesium, and collagen. A great source of collagen is avocado. Omega-3, you can have seeds, chia seeds, and then क्यूनोला. ये सब चीज़ों में आपकी ओमेगा 3 बहुत, ओमेगा 3 इज व्हाट इज एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं वो. सो व्हेन देयर इज अ इन्फ्लामेशन योर बॉडी, दे विल काम योर स्किन. देन मोस्ट विटामिन सी, आंवला, दैट संतरे के जूसेस. सो दिस लीफी वेजिटेबल्स हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं. दैट साग, जो ग्रीन साग होते हैं एंड देन लाल साग होते हैं, दे आर गुड सोर्स ऑफ एंटी इन्फ्लामेशन, विटामिन्स, मिनरल्स. सो आपने देखा होगा कि मदर बोलते थोड़ा सा आप ले लो. सी, अगर आप जैसे जैसे एजुकेट होगे ना, यू ऑलवेज टेक अ बंच ऑफ साग टू इंडल्ज, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली the spinach, green leafy vegetables. They are actually the source of good hair. If you love hair, you take the protein. मुझे दाल चाहिए, मुझे that अंकुरित चना चाहिए, because मुझे अंडे चाहिए, because the hair is made of keratin and there's a totally a source of protein. So अगर आपको अच्छी स्किन और अच्छी हेयर चाहिए तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर माँ. Thank you so much, ma'am. That's really helpful and easy to follow. Moving forward, my last question to you is, क्या आपकी OPD से आप कोई रियल टाइम पेटेंट एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं जो रिलेटेड हो ऑनलाइन स्किन केयर एडवाइस और हमारे होम रेमेडीज से? एक मैं इंसिडेंट सुनाना चाहूँगी. अमोल, लोग उस पर चूना लगा लेते हैं या फिर
टूथपेस्ट अगर एक्नी पे, सबसे इम्पॉर्टेंट है चूना. सी प्लीज़ डोंट अप्लाई अ हार्श एसिड ऑन योर स्किन टू बर्न द मोल. कुछ भी अपने स्किन पे लगाने के पहले आप उसकी साइंस को समझिए. गूगल, चैट जीपीटी एंड एवरीथिंग इज़ देयर. अगर आप पूछेंगे चूना लगा सकते हैं, दे विल से ऑब्वियसली से दिस इज समथिंग कैल्शियम रिलेटेड एसिड है, यू कांट, दे विल बर्न योर स्किन. सो मेरे पेशेंट्स एक बार चूना लगा के आए थे एंड दे हैव अ 1.5 inch depth of scarring and there's a lots of inflammation around the mole. उस एक ट्रीटमेंट को ठीक करने में मुझे एटलीस्ट 3 to 4 ट्रीटमेंट्स करने पड़े टू काम द इन्फ्लामेशन, टू फिल द स्कार. एंड यू ऑलवेज नो कि स्कार इज़ ऑलवेज अ स्कार. सो फेस पे ऐसी चीज़ें बिल्कुल ट्राई ना करें. सेकेंड, मैंने जो देखा है टूथपेस्ट पे बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं. कोई दूध लगाता है एंड कोई बासी पानी लगाते हैं. ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करें. टूथपेस्ट लगाते हैं, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करें. बिकॉज समटाइम्स यू लैंड विद अ मोर प्रॉब्लम देन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. समटाइम्स यू लैंड विद अ मोर प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम देन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. ऑलवेज आस्क अ डॉक्टर before doing anything on your face at least. It's my advice. Thank you so much, ma'am, for sharing such a wonderful experience. Can we have a small rapid round question? Yeah, sure. One skincare rule everyone must follow. Cleansing. Okay, sunscreen, yes or no? Yes. Natural remedies or clinical treatments? Not both. Science-based things. Do you need? No, obviously, no home remedy. One habit that damages skin the most? Over-exfoliation. Your go-to tip for instant glow? Hydration. Thank you, ma'am. Before we conclude, what message would you like to give to our young audience about skincare, confidence, and self-care? So I always say, beauty lies in the eyes of beholder. Be confident, because confidence built if you feel good. So it's always a feeling, how you feel. If you feel you're beautiful, you are beautiful. So I always ask my patient, to my every person जिससे मैं मिलती हूँ, everyone have a right to look beautiful. And they are, and he or she is beautiful. Never allow anyone to comment on your body, comment on your face, comment on hair. Because a small correction make you more beautiful. And if they are beautiful, they have something, they have done something, and you can also. So be confident, and confidence is a most amazing, most precious accessory that every person can wear. Thank you so much, ma'am, for sharing such a valuable insights. आज का सेशन truly informative और enlightening रहा. Thank you for this. Thank you. दोस्तों, याद रखिए, healthy skin is not about perfection. It's about protection and care. With this, we come to the end of today's episode of Sanvad. Stay aware, stay confident, and keep glowing inside and out. Jai Hind.